in this video the chapter number first of class 6 and that is number system. In the last video we have completed exercise 1C. So now let's see the next concept of exercise 1D. So next topic is estimation. Yes, next topic. So first of all करेंगे अपन rounding a number to the nearest 10. So first करेंगे अपन राउंडिंग ए नंबर टू द नियरेस्ट 10. किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए फर्स्ट 3 स्टेप को फॉलो करेंगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप फर्स्ट सी द वंस digit of the given number. So student, first step क्या होगी? See the ones digit of the given number. जो भी given number है उसके अंदर किस नंबर को चेक करना है? ones digits को. ओके, so ones digit any number. For example 3, 2, 5, 6, 8. तो नंबर इज 32,568. तो 8 इज वंस डिजिट. ओके, एंड नेक्स्ट 6 इज टेंस डिजिट. ओके, एंड नेक्स्ट इज 100 digit, hundreds digit. Okay, and next 2 is thousands digits, and next last 3 is 10,000 digits. Okay student, so step first is see the ones digit of the given number. So सबसे पहले ones digits को चेक करेंगे. तो ones digits फर्स्ट डिजिट ऑन द राइट साइड से. ओके, नेक्स्ट स्टेप 2. इफ ones digit is less than 5, तो replace ones digits by 0 and keep the other digits as they are. So student, next step 2. if ones digit is less than 5, अगर ones digit लेस देन है 5 से, मीन्स 5 से कम है, तो रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0. जो भी वंस डिजिट होगा 5 से कम उसको किस में रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, किस में? 0 में. एंड कीप द अदर डिजिट्स आर दे आर. सो कीप द अदर डिजिट्स, जो भी रिमेनिंग डिजिट्स होंगे उनको सेम एज सेम ओके लिखेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप थर्ड
if one's digits is 5 or more than 5, increase tens digit by 1 and replace one's digit by 0. So student, step third, if one's digit is 5, equal 5 या more than 5, या तो 5 के इक्वल हो या 5 से ज़्यादा हो, तो इंक्रीज टेंस डिजिट बाई 1. अगर वंस डिजिट 5 या 5 से मोर देन है तो जो नेक्स्ट टेंस डिजिट है उसके अंदर +1 कर देंगे, मीन्स इंक्रीज टेंस डिजिट बाई 1. तो 10 डिजिट्स में इंक्रीज मतलब +1 कर देंगे. ओके, तो एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0, एंड रिप्लेस कर देंगे वंस डिजिट को टू 0 एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0. ओके स्टूडेंट, तो 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज सी द वंस डिजिट बाई ऑफ द गिवन. सो 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. जो भी गिवन नंबर है उसके अंदर चेक करेंगे वंस डिजिट्स को. ओके, एंड सेकेंड स्टेप, इफ वंस डिजिट इज लेस देन मीन्स कम है 5 से, तो इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5 तो रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0. तो डायरेक्टली वंस डिजिट को रिप्लेस कर देंगे बाई 0. ओके, एंड जो भी कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर. एंड थर्ड स्टेप, इफ वंस डिजिट इज 5 इक्वल 5 और मोर देन 5, या तो 5 के इक्वल हो अदरवाइज मोर देन 5 हो, तो इंक्रीज टेंस डिजिट बाई 1. जो भी टेंस डिजिट होगा उसमें +1 करेंगे, एंड जो वंस डिजिट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे बाई 0. फॉर एग्जाम्पल, examples. First example 43. So student, first example is 43. So first step, see the ones digit of the given number. So given number is 43. So first digit is 3. तो ones digits is 3. So second step, if one's digit is less than 5, yes, one's digit 3, तो 3 is less than 5. Okay, so 3 is less than 5, तो replace one's digit by 0. जो भी one's digits है उसको replace कर देंगे. So रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0, तो 3 है उसको रिप्लेस कर देंगे बाई 0. ओके, तो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज 40. तो 40 इज आंसर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. 2047. 2047 is next example. So first step is see the ones digits of the given number. तो given number is 2047. So see the ones digits.
तो वंस डिजिट इज वंस डिजिट इज 7. ओके. स्टेप 2, इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5 बट वंस डिजिट इज मोर देन 5, तो स्टेप डायरेक्टली 3. इफ वंस डिजिट इज 5, नो. मोर देन 5, yes. वंस डिजिट इज मोर देन 5. मोर देन 5, तो इंक्रीज 10 डिजिट बाई 1. तो 10 डिजिट इज 4. इंक्रीज 10 डिजिट बाई 1, सो 2 0. 10 डिजिट 4, इंक्रीज 10 डिजिट बाई 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5. एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0 एंड रिप्लेस 1 डिजिट 7 बाई 0. तो द राउंडेड नंबर इज 2050. दिस इज आंसर. ओके स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. The given number is 12,435. Okay. तो स्टेप फर्स्ट इज सी द वंस डिजिट. वंस डिजिट इज 5. एंड स्टेप सेकेंड, इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5 बट वंस डिजिट इज इक्वल टू 5. सो डायरेक्टली स्टेप 3, if one's digit is 5, yes, one's digit is 5 equal 5. Increase 10 digit by 1, तो 10 digit is 3. Increase plus 1 equal to 4. So number is 12,400, same number, and 10 digit convert in 3 to 4, and जो 5 and replace वंस डिजिट बाई 0. सो वंस डिजिट को रिप्लेस करना है बाई 0. तो सॉल्यूशन इज 12,440. ओके स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट टू सेकेंड टाइप. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप सेकेंड, rounding a number to the nearest 100. So second type, rounding a number to the nearest 100. इस बार है 100. Okay. So same process. Step first. तो first step same. See the 10 digits of the given number. So student, इस बार see the 10 digits. So 10 digits, second digits right side से. Okay. Step 2, step second, if 10th digit is less than 5, replace each one of 10 tens and ones tens and ones digit. Means both
both of digits by 0 and keep the other digits as they are. Okay student, so step second is, if 10 digit is less than 5, so 10th digit is less than 5, to replace each one of tens and ones digit, both digit tens and ones and tens digit, both of digits by 0, दोनों digits चेंज, दोनों digits रिप्लेस हो जाएंगे 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर, अदर जो भी रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो सेम रहेंगे. नेक्स्ट स्टेप थर्ड, इफ टेंस डिजिट्स is equal 5 or more than 5, increase hundreds digits, increase 100 digit by 1 and replace each digit on its right by 0. Okay, so step third is, if tens digit is equal 5 or more than 5, तो increase hundreds digit by 1. so इस बार hundreds digit increase by 1 and replace each digits on its right by the 0 and 10 digit and 1 digit, both digit replace by 0. okay, for example, तो example first, so given number is 642. so first example is 642. see the tens digits of the given number. tens digits is, so tens digit unit digit and second tens digit, so tens digit is 4. okay, and second step, if tens digit is less than 5, yes, tens digit is less than 5 and replace each one of tens and ones digit, both of digits by 0. so both of digits ones and tens, so tens digit replaced by 0 and ones digit replaced by 0, so both digits replaced by 0. okay, and this is answer. okay student, and next example number 2. example second, 2368. okay, so first step, see the tens digits of the given number. so tens digits is, so tens digit is unit digit 8 and tens digit 6.
Okay, if second step, if tens digit is less than 5 but the tens digits is greater than 5, directly third step, if tens digit is equal to 5, no, more than 5, yes, more than 5. So increased 100 digit by 1, so 100 digit is 3, so 3 increase plus 1 equal to 4, and replace its digits on its right by 0. So unit digit, ones digit and tens digit replaced by 0. So solution is 2400. This is answer. Okay student. And next type, third type, rounding a number to the nearest thousand. So third type, rounding a number to the nearest thousands. Okay, so same process. First step first, see the hundreds digit of the given number. So इस बार see the hundreds digits. So 100 digit is ones, tens and 100. Okay, third unit. And second step, if hundreds digit is less than 5, so replace each one of hundreds, tens and ones digits by 0 and keep the other digits as they are. So step second is, if 100 digit is less than 5, so replace each one of 100, tens and ones digits by 0, means complete 1 2 3 digits replaced by 0 and keep the other digits as they are. Okay, step third, if 100 digits is equal to 5 or more than 5, increase thousands digit by 1 and replace each digit on
its right by 0. So third step, if 100 digit is equal to 5 or more than 5, to increase thousands digits. So 1000 digits is 2 digits by 1 and replace each digit on its right by 0. So right by 0, 1, 2, 3, 100, tens and ones digit replace by 0. Okay. For example first. So example first is 5486. So step first is see the hundreds digits of the given number. So ones digit, tens digit, 100 digits. So 100 digit is equal to 4. Hundreds digits is equal to 4. Okay. And step second, if 100 digit is less than 5, yes, 100 digit 4 is less than 5. So replace each one of hundreds and tens and ones digit by 0. So ones, tens and 100 replaced by 0. So solution is 5 hundreds replace 0, tens again replace 0 and ones again replace 0. This is answer. Okay student. Next example second. 23,658. So first step is see the 100 digit of the given number. So given number 23,658. So see the 100 digit of the given number, ones, tens and 100 digit. 100 digit is 6. Okay. And next step, if 100 digit is less than 5 but 100 digit is 6, so 6 is more than 5. So directly step 3, if 100 digit is more than 5, yes, more than 5, increase 1000 digit by 1. So 1000 digit 3 plus 1 equal to 4 and replace 1 each digits on its right by 0. So solution is 2, 3 increase by 1. So 3 plus 1 equal to 4 and replace each digit on its right by 0. तो right side में जितने भी digit है वो क्या हो जाएंगे, 0 replace. Okay. So 3 types of rounding a number. Okay. And next type, rounding a number to the nearest 10,000, next 1 lakh, next 10 lakh. So same process in all these part. Okay student. So next exercise 1D in next class. Okay.